I salute you all, and I salute the God within all of you. Before we begin, just for a few minutes, sit, relax your body, and close your eyes. Take a deep breath in, deep breath out. When you inhale, inhale as deeply as you can. When you exhale, exhale as deeply as you can. Try to listen to the sound of your breath. When you inhale and exhale, expand and contract like a balloon. And with each breath, try to increase your power of observation. When you inhale, try to feel your breath on the tip of your nose. Feel the breath as it goes inwards through the throat to the lungs, from the lungs to the heart. From the heart, follow your breath to every cell of your body. And as you start to exhale, feel the breath going back to the heart, back to the lung, up through the windpipe, out through the nose. And as the breath leaves you, feel it on your upper lip. And how does it feel when something that was inside you, part of you, is now gone? But it is all right, because the new breath will take its place, and then the new will become old. The old will go, and this cycle will continue. Each breath like a wave in the ocean. Do not try to hold on to the breath. If you try to break this cycle, you will become uncomfortable. Do not hold on to the old. Do not hold on to the new. Let the breath come in. Observe it in every cell of the body and let it go. Release. You are trying to practice observation as well as detachment. Observation without attachment. Full breath in, full breath out. Try to observe the breath in every cell of the body, as if in this single moment you are aware of the whole body. Be aware of all the sensations, your hair, your eyelids, your nails, your lips, your nose, your eyes. Be aware of the chair under your bum. Be aware of my voice in your ears. Be aware of your clothes on your skin. Full breath in, full breath out. Go deeper. Try to be aware of the life within each cell, within each muscle. Try to be aware of the blood pumping through your veins. Take the awareness outwards. Try to be aware of the weather around you. Is it cold or hot? Try to be aware of what is the light around you. Is it darkness? Or are the lights switched on?
Expand your observation even more. Do you feel the presence of the divine? When you close your eyes and your body is in this room alone, listening to me, are you really alone? Or can you observe the divinity, the grace, the blessings that are around you? And the beauty about stimulus is the more you connect to any stimulus, the stronger it becomes. You know you have been taught that the divine is infinite and its grace is infinite. So try to feel that infinity in the room in which you are present. And just for a moment, forget the day that has passed and focus on what is in front of you, the embrace of the divine. 3 deep breaths. Inhale. Two more. One more. Relax. With your eyes closed, open yourself to the experience, to the joy, to the happiness, and to the gratitude that you are about to experience. And before you open your eyes, let there be a simple thought, an acceptance. Good things will happen in my life. And I'm grateful for all the good that I am about to experience. Excellent. With a smile on your face, slowly open your beautiful, beautiful eyes. Bless you. I hope wherever you are happy and you're walking the path of divinity. I pray that you find peace. I pray that you become a vessel of divine light. And now, as we begin, there's a question that was asked to me, and I would like to address that question. And the question was, I miss my Guru. I would like for my Guru to be in front of me. I would like to learn from my Guru all the time. The question was as if the person asking the question wanted that the Guru becomes like a butler, like an Alfred to Batman. And wherever the person wants anything, he just asks the puddler, the Guru, and the Guru is there to provide. Yes, sir, how may I please you? And this question is very, very interesting. But I want you to let this question lead to another question. And that question is, how much is enough?
I will repeat, how much is enough? Because the gentleman asking the question that I really want my guru to be there. First, he feels that they are disconnected to the guru, disconnected to the spirituality, and that the spirituality needs to make a grand gesture to somehow appear in front of that person. The skies must open, the ground must shake, the divinity must come in front. Only then somehow will I appreciate, accept what the divinity is trying to give me. When I was young, there was a joke that children used to tell to each other, and the joke was that once a man was drowning in a flood, and he looked up and said, God, I have been a good man all my life. I have prayed to you every single day. Help me if you can. And a man comes in a boat and says, oh, let me help you. And the man says, no, not today. I will only wait for God to come and rescue me. The man in the boat goes away, and then this man who's drowning looks up and says, God, you will have to rescue me today. I have prayed to you all my life. I have sought your blessings. I have surrendered in every single way. Come and save me. So a man comes with a bigger boat, a yacht, a fancy yacht, and says, come aboard. Let me save you. And the man says, no, get lost. Only God will save me. And so this man goes away also. And the drowning man looks up and says, God, this is height of your ego, your absurdity, your nonsense, you sitting in your heavens, surrounded by your apsaras. What is wrong with you? I am your creation. You are a heartless, cold deity. I am asking you to save me. Why don't you save me? And suddenly then, a man comes with a helicopter. And the helicopter is hovering above this man. And the helicopter pilot says, come, I've come here to save you. Climb the ladder. Let me fly you away from this predicament. And the man says, no, I will wait for God. I will wait for that grand gesture. So the helicopter pilot flies away and the flood increases. And this poor devotee, he drowns, and when he drowns, he dies, and when he dies, his soul goes to the heavens, and in the heavens, he sees the God. And he looks at the God and he says, why didn't you come to save me? What is wrong with you? And God looked at him with a frustrated expression and says, who the hell do you think sent you and the helicopters? And that is the predicament. One is, I want divinity in my life. And the second is that I want divinity. How I want divinity in my life. One is, I trust the universe. I trust the process, and I trust nature. And the second is that my ego says that I will be a control freak and I will try to control everything around me. I will even try to control God and spirituality and the holy siddhas. And the person who's trying to control everything and everyone, a person who's a control freak, is a person who's always going to experience great sorrow because you can't control everything. In fact, joy and laughter comes when you surrender. Why is entertainment today such a big deal? Why is it such a big release for people? Because when you are sitting in front of the television, you surrender to the story. You cannot control how your show ends. 9 years you sat in George R.R. Martin's Game of Thrones, and even though the ending was nonsense, you couldn't control the ending, could you? You surrendered to the whole process. And that is why sometimes it got you joy, sometimes it got you happiness. And
ultimately it got you what it did get you. Control comes from ego. And the trouble with control is, I will want what I know. I close myself to the beauty, to the experience of the unknown. हिंदी में एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कहने का मतलब कि बंदर जानता ही नहीं, और जो चीज तुम जानते ही नहीं, तुम भगवान से उस चीज की प्रार्थना कैसे कर सकते हो? अगर सोच छोटी है, मन छोटा है, अनुभव छोटा है, तो तुम्हारी इच्छाएं भी बहुत छोटी होंगी। और वहां भगवान तुम्हें कहेगा, इस छोटी सोच को त्यागो, बड़े को समझो, प्राप्त करो, अनुभव करो। लेकिन जिसकी सोच छोटी है, वो भगवान से कहेगा, हे भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे एक स्कूटी दे दे। और भगवान कहेगा कि देखो, तुम्हारी हैसियत रोल्स रॉयस वाली है, समझो तो सही। लेकिन तब अगर मेरी सोच ये है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, छोड़ो भगवान को, छोड़ो दिव्यता को, छोड़ो उनके ज्ञान को, मैं तो अपने हिसाब से सब चीजें चलाना चाहता हूं, तो फिर समस्या है। Then there is a problem. Sometimes surrender is a good thing. Imagine if you go to a person who's an expert in making a portrait, and then you try to control how he makes it. And the fantastic thing is that that person is the expert in making the portrait. That person is the Leonardo da Vinci, and you are you, but you have commissioned that person to make the portrait. And as he starts to make the portrait, he makes the first line, and you start cribbing. This doesn't look like me. This is just a line. I don't like it. This is black color. This is black. I am not black. Look, look, look. Look, I am so fair. My eyes need to be better. My skin needs to be lighter. Giving instructions all the time. What will happen? Two things. Either you will get frustrated and run away, or either the man making the portrait will hit it on your head and run away. And yes, if he's making the portrait, wait, give it time. Soon the portrait will be finished. It will be beautiful. It will be amazing. But if we try to control the process, then we will not be able to cherish the process or even wait for the end result. In the same manner, goes to the God, to the spirituality, to the Guru, and says, no, I want to control the process. I have read somewhere something. So if I am walking on the path of spirituality, my boxes must be tick marked. And if they are not, then I will go away. Not realizing कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. That if you've not made a painting, how do you know the art of the painting? Trust the painter. और होता है। एक बार मैं एक चिकित्सक के साथ बैठा था, और उस चिकित्सक के पास एक व्यक्ति आया, और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है। और चिकित्सक ने कहा, ठीक है, ये दवा खा लो तुम। और उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दवा तो नहीं खाऊंगा, मैं तो ये फार्मास्यूटिकल में विश्वास ही नहीं रखता, मैं तो घर जाके फलाना ये खाऊंगा, ढिमकाना खाऊंगा, थोड़ा प्राणायाम करूंगा, थोड़ा ये करूंगा, थोड़ा वो करूंगा। मैंने ऐसी किताब पढ़ी है, उस किताब में ऐसा लिखा है, फिर ये पढ़ा है, उस किताब में वैसा लिखा है। चिकित्सक मुस्कुराया, और मुस्कुरा के उसने पूछा कि तुम्हें ये जो समस्या है कितने सालों से? उस व्यक्ति ने कहा 10 साल से। तो
तो चिकित्सक ने कहा, अगर 10 साल से तुम्हें तुम्हारी समस्या है तो तुम्हारे पास 10 साल थे अपने ज्ञान से इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, क्या तुम्हें मिला? और अगर समाधान नहीं मिला तो अब जो मैं समाधान दे रहा हूं इसे भी एक बार अपना करके देख लो। यहां पे क्यों तुम अपने अहंकार को सामने रखते हो? The definition of insanity, doing the same thing, expecting a different result, and that's what the ego does, trying to make us remain in that comfort zone. So even when we go to a spiritual person, we go to the divinity says that this is the path, this is what you must follow, this is what you will need to experience something. We say no. We feel that if you do this, it is going to be better. And sometimes it is not a democratic process. चिकित्सक तुम्हारी सर्जरी कर रहा है, इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. देयर इज अ रीजन तुम्हें सेडेट करके लेटा दिया जाता है, क्योंकि सोचो एक कंट्रोलिंग व्यक्ति की अगर सर्जरी हो रही होती तो वो किस तरीके से अपनी सर्जरी को करवाता या करवा सकता. क्योंकि बेचारा चिकित्सक एक कट मारता, इंसिजन मारता, वो कंट्रोलिंग आदमी कहता है अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए, मैंने तो किताब पढ़ी थी और किताब में तो ऐसे था, वैसे था, ये था, वो था. तो चिकित्सक भी जानता है इसको सेडेट कर दो, इसको बिठा दो, तो शायद मैं इसका भला कर पाऊंगा, क्योंकि इसका जो अहंकार है वो इतना ज्यादा है कि ये अपनी माया में फंसा अपने आप को उन डार्क एजेस में रखा रहेगा. एंड दैट इज अ फैक्ट. It is not that when humanity was going through dark, and when I say humanity, I mean the Western world, Europe, when Europe was going through dark ages, it is not that enlightened people were not born. Enlightened people were born, but the people who were controlling did not like the enlightenment of the enlightened people. And hence, the Inquisition was set up, a court was set up to thump those people who came up with the enlightenment and knowledge and information and paths of success. They were kept quiet, they were put in jail, they were crucified. Simply because the person with the ego, who's a control freak, will say that I want to control even knowledge and how it is presented. So the question should not be that why is my guru not listening to me. The question should be that am I listening to the teachings of my guru? Yes. हमारे भारत में कहावत है, सुपात्र बनना सीखो. और सुपात्र का मतलब है सोने जैसा. और सोना क्यों कीमती है हमारे लिए? Why is gold so important? Why do they say that we must imbibe the qualities of gold? The first quality that we must imbibe of gold is simple. A gold is a superconductor. And superconductor means that whatever is put inside gold, it can take it, it can transfer it without due to friction. Whatever electricity you put into gold, whatever information you put into gold, it accepts it, embraces it, transfers it. There is no friction inside. There is conductivity. Whereas if you take a block of wood and you put electricity inside, there is zero conductivity. The block of wood is a blockhead. So when the saints say, be like gold, it means be like a superconductor, so that the divine information can flow through you. But if you are a blockhead, then even if Krishna comes in front of you, you will be like Shishupal. Even if Ram comes in front of you, our mindset is like Ravan. Even if Shiva comes in front, our mindset is of Andhakasura, जो अंधा है. Knowledge is always there.
एंड अ पर्सन हु इज अ सुपात्र, उसके जीवन में गुरु एक बार आएंगे, एक बार काफी है, और वो गुरु उसको ज्ञान दे देंगे और वो व्यक्ति उस ज्ञान को बढ़ा सकता है, उसका मंथन कर सकता है। और जो बेचारा ब्लॉकहेड है वो 1000 शिविर में आ जाए और 1000 शिविर के बाद भी अगर उसके गुरु समाधि ले रहे होंगे, वो गुरु को बोलेगा तुम तो बड़े घटिया आदमी हो, मैं तो 10 और शिविर तुमसे चाहता था, मैं तो तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ना चाहता था, मुझे तो वो मिला ही नहीं जो मैं चाहता था। और ऐसा नहीं है, उसे मिला नहीं, गुरु ने 1000 बार दिया, लेकिन गुरु ने अमृत उल्टी कटोरी के ऊपर डाला, जितना डाला बह गया। इट वॉजंट कंडक्टिंग इनसाइड द हार्ट, बिकॉज इफ इट हैड टू कंडक्ट, थिंक अबाउट इट, one Christ sitting in Israel, when he was crucified, how many people did he teach to? Just a few, and that thing grew. Why? Because the student took the information, the knowledge, the power, it conducted into them. Think about it. सनातन काल में गुरु एक बार आते थे, दीक्षा उन्होंने प्रदान की, अब साधक शिष्य के हाथ में है कि वो उस साधना को कितना गहरा उतारता है। और आज की तारीख में इतना सब मिलने के बाद भी अगर हमारे भीतर सवाल है कि हमें स्पून फीडिंग क्यों नहीं हो रही, बाबा जी हमारे बगल में क्यों नहीं बैठे, तो फिर शायद दीक्षा में कहीं समस्या नहीं, फिर शायद समस्या हमारे अहंकार में है, हमारी कंडक्टिविटी में है। क्योंकि जो हमें 5 शिविर में नहीं, क्या गारंटी है कि छठे में मिल जाएगा? जो व्यक्ति तैयार है उसे सिर्फ अपने गुरु के बारे में एक बार सोचना है और उसके गुरु की सारी शक्ति, सारा तप, सारा ज्ञान, सारी ऊर्जा उस तक प्रवाहित हो जाएगी। वो व्यक्ति हर शिविर में आके अपने साक्षात्कार को ग्रहण कर सकता है। और अगर तुम अनुभव करते हो कि आके भी तुम्हें चिढ़ मच रही है, तुम्हें दुख हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण के सामने हम शिशुपाल बने बैठे, कि हमें पता ही नहीं, that we are unhappy। और समस्या क्या है कि जो अंधकासुर है, जो अंधा है, मन से जो अंधा है, उसको लगता है कि वो इकलौता सच्चा, बाकी दुनिया पागल है। जहां तुम्हें लगना शुरू हो जाए कि जी दुनिया पागल है, हम इकलौते हैं जिसे दिखता है और हम तो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, This is the basis of a delusional disorder, that everybody else is mad except me। हर पागल को यही लगता है कि जी दुनिया पागल है, हम इकलौते हैं जिसे सही दिख रहा है, और हम तो उसे भी दिखाएंगे, इसे भी दिखाएंगे, उसे भी दिखाएंगे। So we have to understand, we have to think that somewhere, even one touch of the Guru is the Shakti path. One word is the Diksha. So we must take that information, that knowledge, be grateful for it. और फिर अगर ज्यादा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज्यादा मिलता है तो तुम एक रेन फॉरेस्ट के वृक्ष बन जाना, और अगर कम मिलता है तो तुम रेगिस्तान का पौधा बन जाना, लेकिन बनना जरूर। तब दुखी मत होना कि अरे हमारे ऊपर तो वर्षा बड़ी कम हुई, तो तुम्हें क्या लगता है रेगिस्तान में पौधे नहीं उगते? रेगिस्तान में भी पौधे उगते हैं। मेरी परवरिश रेगिस्तान में थी और बहुत पौधे उगते हैं, बहुत हरियाली है, बहुत जीव जंतु। तुम्हारी सोच है कि तुम्हें लगता है कुछ नहीं है रेगिस्तान में। और अगर बहुत वर्षा होती है, then be the tree of the rainforest, be tall, be big, be something, but be something।
डोंट से टू योर सेल्फ कि जी अगर हमें ऐसा मिलता तो हम वैसे हो जाते। ना जीना, ये तुम्हारी जस्टिफिकेशन है, तुम्हारे अंदर का कंट्रोल फ्रीक है। और ये तुम्हारे अंदर का कंट्रोल फ्रीक है। जैसे चींटी होती है ना, जो अपने बिल को बनाती रहती है, चूहा अपने बिल को बनाता रहता है, चिड़िया अपने घोंसले को बनाती रहती है, वैसे हमारी सोच, हमारा पशु भाव भी हमारे एक आसपास के एनवायरनमेंट को बनाता रहता है। So the first quality that you must understand is conductivity. I must take all the information, all the knowledge, all the divinity, all the power that my guru is trying to give to me. Yes? Bless you. The second quality is its malleability. And malleability is, तुमने कभी सोने को देखा है? Why is gold such a precious metal? Because gold is malleable. You can give it any shape. You can change it. तुम उसको कूट पीट के तार बना सकते हो, कूट पीट के ज्वेलरी बना सकते हो, कूट पीट के कुछ भी बना सकते हो, वो बन जाएगा। हमारे शास्त्रों में एकलव्य की कहानी, वो सीखना चाहता था, द्रोणाचार्य के पास गया तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, तो उसने जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति बना दी और उसी से सीखना शुरू कर दिया। That is called malleability, not letting the situation stop you. Find a way. A way. If you are not malleable, if you don't adapt, if you don't evolve, you perish, you become extinct. और एकलव्य ने सीख लिया। जब मीराबाई अपनी भक्ति साधना में एक स्थान पे थी, तुम्हें क्या लगता है उसको उस स्थान पे रुकावटें नहीं आई? लेकिन मैलिएबिलिटी का क्या मतलब है? अडैप्ट, इवॉल्व, persevere through every single situation. If you become rigid, you become extinct. You must find a way. और अगर तुम कहते हो कि जो पहले था वैसा ही रहे, कितना अच्छा होगा, अगर ऐसी सोच रखते हो तो then there is only extinction. 100 साल पहले गाड़ियों जैसा कुछ था ही नहीं, सब घोड़े पे थे, फिर गाड़ियां आई। We must become malleable, we must accept the cars. If you do the cars और कहो जी मैं तो अपने घोड़े पे ही बैठूंगा, मुझे तो मेरा घोड़ा बहुत पसंद है, ये गाड़ी तो बड़ी खराब है, ना भूसा खाती है ना हगती है, मुझे तो गाड़ी नहीं अच्छी लगती, क्या होगा? दुनिया गाड़ी पे बढ़ जाएगी और तुम बेचारे अपने घोड़े पे रह जाओगे। फिर हवाई जहाज आए, यू मस्ट एक्सेप्ट, यू मस्ट इवॉल्व, यू मस्ट अडैप्ट। And if you don't adapt, what is going to happen? Extinction will happen. Even the divinity needs to adapt. हर युग में अगर भगवान ने अवतार लिया तो युग के हिसाब से उन्होंने अवतार लिया। तो अगर भगवान भी अपने फॉर्म को मैलिएबल बनाते हैं, अडैप्ट करते हैं, तो तुम्हारा अहंकार क्यों इतना ज्यादा है? कुछ लोग आए, कहा कि अरे शिविर क्यों नहीं हो रहा, इंडिया में क्यों नहीं शिविर हो, हम क्यों इंडिया में 20-30 हजार लोग को इकट्ठा नहीं कर सकते? और उन्हें देख के मेरा सर चकरा रहा है कि अभी पेंडेमिक चालू है, जान मान प्राण के पड़े हुए हैं लोगों को, और वो चाहते हैं कि जो पहले हो रहा था वही हो, वही एक भीड़ हो, वही सब आसपास कंधे से कंधा लगा करके बैठे, वही एक दूसरे पे खांसे, दे दनादन जोर की सांस लें, फुआ फू फुआ फू। और जहां कहीं कोविड फैल भी नहीं रहा वहां थोड़ा और फैला दे, ताकि दुनिया डेल्टा के बाद बोले ये तो इंडिया ने फैलाया है। एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू बी मैलिएबल। उन्हें मैं कोशिश कर रहा हूं कि देखो, वी हैव इवॉल्व, वी हैव अडेप्टेड टू द सिचुएशन। कोविड के समय शिवयोग ने 10,000 लोगों के साथ योगा ऑफ इमॉर्टल्स का रिसर्च किया। 10,000 लोग रोज साधना कर रहे थे,
और ऐसा नहीं कि शिविर में 3 दिन साधना की भूल गए, साल भर तक 10,000 लोगों ने रोज साधना की, साथ ही साथ कई लाख लोगों ने पूरे साल के दौरान कई शिविर ऑनलाइन अटेंड किए। दे वर बीइंग मैलिएबल। और आज की तारीख में इतने लाख लोग फोरम से साधना कर रहे हैं। अभी पितृपक्ष आ रहा है, तो वो जो साधना बाबा जी ने असेंशन की कराई वो भी कर रहे हैं। फिर श्री विद्या और त्रिपुरा रहस्य की जो साधना मैं उन्हें देना चाहता हूं वो भी करेंगे। और ये लोग कहते हैं अच्छा कैसे, कहाँ, हमें तो पता ही नहीं। तुम्हें पता नहीं क्योंकि तुम पता करना चाह नहीं रहे। यू आर नॉट बीइंग मैलिएबल, यू आर बीइंग रिजिड। And the root cause of all sorrow is when we become rigid. When a mother looks at her child and says, I hope and pray you remain a child, you remain stupid, you remain dependent upon me, so we can have a codependent relationship. But that is not going to happen. The child will mature. The child may not need the mother anymore. And the more the child will grow and mature, the sadder this woman will feel, because she will say, I do not like these changes. But if the mother understands that the only thing permanent in nature is change, and everything else changes, and it's all right, it's evolution. ब्रह्मचार्य के बाद अपने आप गृहस्थ होगा, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ होगा, वानप्रस्थ के बाद संन्यास होगा। ठीक है, ये तो होना ही है। I accept, embrace with a lot of dignity. I understand the change, the evolution. Then I am the grand old man of my family. But if I don't embrace the evolution, the change, then I am the frustrated old man of my family, looking at the whole world evolve and go into things. And I am the pessimist trying to look at all the kings in their armor, trying to see what is the worst in every possible situation, so I can just say that my ego is better. मैलिएबिलिटी का मतलब हो सकता है भगवान बोट बन के आए। मैलिएबिलिटी का मतलब हो सकता है भगवान बन करके आए। मैलिएबिलिटी का मतलब हो सकता है भगवान किसी और रूप में आए। मैलिएबिलिटी का मतलब समझना भगवान आएंगे जरूर। एक सिद्ध की कहानी है कि एक सिद्ध बैठा था और उसकी साधक उसके पास आई, कहती है बाबा जी मेरे घर पे खाना खाने जरूर आना। और बाबा जी ने कहा ठीक है, मैं पक्का आऊंगा, जरूर आऊंगा। और कहते हैं कि वो घर गई, उसने खूब पकवान बनाए और इंतजार कर रही थी। तो एक चिड़िया आई, उसने चिड़िया को पत्थर मार के भगा दिया कि अरे ये चिड़िया खाना ना खा ले। फिर एक कुत्ता आया रोटी मांगने, उसने कुत्ते को भी पत्थर मार के भगा दिया। फिर एक गाय आई, उसने गाय को भी डंडा मार के भगा दिया कि ये खाना तो मैंने अपने गुरु के लिए रखा है। लेकिन गुरु आए ही नहीं। अगले दिन आग बबूला होके गुरु के पास गए, मान ले कितना खाना बनाया, यू सेल्फिश पर्सन, यू डिडंट इवन कम टू माय हाउस। और गुरु ने कहा मैं तो 3 बार आया, तीनों बार तूने पत्थर मार के भगा दिया। पहले मैं चिड़िया बन के आया, तूने मुझे भोजन नहीं दिया। मैं कुत्ता बन के आया, तूने भोजन नहीं दिया। मैं गाय बन के आया, तूने भोजन नहीं दिया। ईगो सेज गॉड इज इन एवरीथिंग एंड माय गॉड इज ग्रेटेस्ट। स्पिरिचुअलिटी सेज गॉड इज इन एवरीथिंग एंड आई एक्सेप्ट एंड आई एम हम्बल। फिर मेरे भगवान हर जानवर में, हर वृक्ष में। अहंकार का मतलब मैं एक मूर्ति बना के रख देता हूँ अपने घर में और कहता हूँ मेरे भगवान हर चीज में है लेकिन इस मूर्ति में ही है, तो मैं इस मूर्ति की इज्जत करूंगा, बाकी हर पेड़ काट दूंगा, हर पशु को मार दूंगा। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब, दिव्यता का मतलब मेरे भगवान तो हर चीज में है, तो मैं हर चीज के अंदर की दिव्यता को स्वीकार करूंगा, अनुभव करूंगा।
And that is what he is, understanding and accepting that God is in every situation. Divinity, learning, teaching is in every situation. You must grow, you must learn, you must adopt, and you must evolve. तो हो सकता है कि जब सतयुग था तो भगवान आकाशवाणी कर सकते थे, अब जब कलयुग है तो यूट्यूब लाइव होता है। लेकिन तुम तो इवॉल्व हो ना। लेकिन अगर तुम कहोगे कि नहीं, जब तक आकाशवाणी नहीं तब तक तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तो फिर पतन, then it is a fall, a downfall. So if we have to be Supatra, what is the first thing? We want to be a superconductor. चाहे थोड़ा मिले उसको भी स्वीकार करना है, ज़्यादा मिले उसको भी स्वीकार करना है. We have to be a superconductor. Means I will not control the divinity. I will not tell the divinity कि आप ये करो, आप फिर जो है वो प्रसाद है, मैं स्वीकार करता हूँ. I accept it. हाँ जी, ना जी. Second, malleability. I must find a way to the divinity. I must adapt to the times. I must be open to changes. I must evolve. I must embrace the wonderful changes that may come in my life. It is like the seasons around me. Celebrate every single change and be about it. And the third thing, why gold is so precious and why we say become a Supatra, because gold doesn't rust. अगर तुम सोने को देखो तो तूतनखामेन के ताबूत में भी हजारों साल पहले जो सोना गाड़ा था वो वैसा का वैसा ही है, जंक नहीं लगा. स्पेनिश गैलियन भी जब डूबा तो उसका सोना समुद्र at the base of the ocean, it's as it was hundreds of years ago. It did not rust. And what is rust? Rust is when the metal comes with an expiry. After some time, it will be destroyed. But the beauty about gold is it doesn't have an expiry. It is what it is and it will always remain. So here the spirituality says, when it says become like gold, it says let your faith, your belief, let it have no expiry. Let it always remain. बहुत लोगों के साथ होता है, जब वो पैदा होते हैं, जब वो बच्चे होते हैं, जब वो मासूम होते हैं, तब वो हर चीज़ में विश्वास रखते हैं. तब उनको कोई आके सेंटा क्लॉज बोलता है वो उस पर भी विश्वास रखते हैं, कोई आके टूथ फेरी बोलता है उस पर भी विश्वास रखते हैं, हर चीज़ पे विश्वास रखते हैं. और फिर चोट लगती है, दिल टूटता है, परेशानी आती है, then what happens on their faith and belief? It gets rusted, and as they become teenagers, as they become adult, they stop believing in everything. Now the faith is rusted, it's gone. Now they don't even believe on their loved ones, they don't even believe the people who are trying to help them, they don't even believe the authority. The faith is gone. And Shiva Yoga says, the masters say, if you want to be happy in life, let your faith and belief not be rusted. And for it to not be rusted, it needs to be safe. Why? Why do you want to test your faith all the time? It has nothing to do with your life. Test your faith का मतलब है कि जी अगर मेरे जीवन में बीमारी नहीं आई मैं तब विश्वास करूँगा. अगर मुझे नौकरी मिल गई मैं तब विश्वास करूँगा. अगर कुछ अच्छा हुआ तो विश्वास करूँगा, और अगर कुछ बुरा हुआ तो मेरा जो धर्म है खड्डे में जाए, मैं क्यों धार्मिक बनूं. और हम ये नहीं समझते that the quality of gold is to be like gold. Doesn't matter if you are in a crown on a king's forehead or if you are at the bottom of the ocean in a Spanish galleon, a gold will always remain gold.
Doesn't matter the circumstances. So your faith and belief should be what your faith and belief is. So what? Sickness came, it's body, it can be sick. So what? Failure comes, it's life. Of course, failures will come, success will come, it is all part of it. Why do you attach your belief to this? To these variations that come in life? Belief should be something very powerful, something very divine, something very deep. Whenever you come back home, you come back to your faith. Whenever you sit in prayer and meditation, you come back to your belief. That is your center. That is your anchor. That is who you are. तो मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ. Doesn't matter if there is sickness or health. मैं भगवान को स्वीकार करता हूँ. Doesn't matter if there is success or failure. मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ. Doesn't matter if there is light or darkness. क्योंकि ये सब कुछ जो भी है ये मेरे कर्मों की वजह से है. और मेरे कर्मों को काट कौन रहा है? मेरे को साधना के मार्ग पे कौन रख रहा है? मेरे को इस दलदल से बाहर कौन निकाल रहा है? वो है मेरे भगवान. और जिस क्षण मैं उस डोर को ही छोड़ दूं जो मुझे दलदल में डूबने से बचा रही है, उस दिन क्या होगा मेरे जीवन में? उस दिन तो मैं बह जाऊंगा. तो इस डोर को कभी भी नहीं छोड़ना. No matter if I grow up, no matter if I'm on my deathbed, no matter if I am in my crib drinking my bottle of milk, my faith and my belief in the divinity will always remain. And trust me, this belief is a very powerful thing. दवा में अगर विश्वास होगा तो वो दवा भी तुम्हारे भीतर प्लेसिबो उत्पन्न कर देगी. अपने आप पे विश्वास होगा तो तुम वैज्ञानिक बन कई आविष्कार कर दोगे. अपनी सोच पे विश्वास होगा तो बन राजपाट का निर्माण कर दोगे. अपनी वस्तुओं पे भी अगर तुम्हें विश्वास होगा तो तुम ब्रांड एम्बेसडर बन एक ब्रांड का निर्माण कर दोगे. और ऐसा नहीं है कि तुम में विश्वास नहीं, तुम में बड़ा विश्वास है. ब्रांड का मतलब ही क्या होता है? ब्रांड इज द इमोशन दैट यू कैरी टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट. एंड इफ यू पे $1,000 for a particular brand, even though the intrinsic value is just $50. Why you are paying 950? Because that's your faith in the brand. That's your belief in the brand. You feel that when you have that brand, you are buying into a certain class. You're buying into a certain standard of living. You're buying into a certain quality of feeling about yourself. And that's faith. Faith in that high fashion. Faith in that brand. I'm just saying that you have faith. But instead of brands, start believing in yourself. If you have faith, instead of things, start putting faith in your God and Guru. Because if you have faith only in the things, then the only person who will benefit is that brand. But if you have faith in yourself, then you will benefit from yourself. If you have faith in your God and Guru, then you help yourself. कलयुग क्यों कहते हैं? क्योंकि तुमने अपना सारा विश्वास लिया और अपने भीतर के भगवान से शिफ्ट कर दिया वस्तुओं के ऊपर. और अब भगवान से भी कहते हो कि जी मेरे को अगर फलानी गाड़ी होगी, फलाना घर होगा तो अच्छा है. तो भगवान मुस्कुराता है और कहता है कि जी तेरी जो वैल्यू है वो इस गाड़ी से बढ़ के. तू अपनी वैल्यू को, अपनी आइडेंटिटी को इस गाड़ी, इस घर से क्यों जोड़ता है? गाड़ी ठुक जाएगी तब तेरे सेल्फ इवैल्यूएशन का क्या होगा? अगर गाड़ी से ही तेरी वैल्यू है तो बहुत डिप्रेशन आएगा लाइफ में. बिकॉज यू हैव एक्सटर्नलाइज्ड योर सोल. And spirituality is about internalizing, finding the peace within, finding the happiness within. Spirituality is about हर हाल में खुशी.
True spiritual person, he never ever loses his faith. He loves his guru no matter where the guru is. क्योंकि देखो, बहुत बार तुम्हारे जीवन में होगा, और इस जीवन में नहीं, कई जीवन तुम जी चुके हो। गुरु आए तुम्हारे जीवन में, एक बार तुमसे मिले और फिर शायद उन्होंने समाधि ले ली, तब क्या करोगे? तब अगर तुम्हारा फेथ स्वर्ण की तरह इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है तो तुम बोलोगे ना जी ना, अगर वो सामने होते तो बात थी, अब वो नहीं है तो चकते फटे, मैं इस जीवन को भी व्यर्थ गवा दूंगा। An indestructible faith means that I love my guru wherever he is. जहाँ कहीं भी हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उनकी दिव्यता को स्वीकार करता हूँ, उनकी ताकत, उनकी शक्ति को स्वीकार करता हूँ। मेरे भगवान जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी स्वरूप में मेरे जीवन में आएंगे, आई एक्सेप्ट। कल सुख स्वरूप में आए थे, आई एक्सेप्ट। आज महादेव दुख स्वरूप में आ रहे हैं, ठीक है, इसमें से भी कुछ सूखना होगा तो आई एक्सेप्ट। एक शिव योगी थे, उनके साथ मैं गाड़ी में बैठा था, वो गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ी तेज चला रहे थे। पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी, कहा लाइसेंस दिखाओ, और इस शिवयोगी ने उसको भी देख के कहा, अरे महादेव आज तुम कोतवाल बन के आ गए, ये लो मेरा लाइसेंस। वो बेचारा पुलिस वाला घबरा गया, है मुझे महादेव कह रहा है। फिर उसने कहा कि ये दिखा वो दिखा, अरे महादेव आज तो तुम सब कुछ देखना चाहते हो, देखो। वो पुलिस वाला घबरा गया और उसने कहा, भैया तुम जाओ यहाँ से, तुम विचित्र हो। और उस शिवयोगी से मैंने सीखा, वो ये नहीं कह रहा कि महादेव तभी महादेव है अगर मेरे सामने आएंगे शेर की खाल पहन के, त्रिशूल लेके, ड्रेडलॉक्स लगा के, सर से गंगा बहती हुई, तब तो मैं मानूंगा महादेव। उसने कहा हर क्षण हर कण से हो रहा है शिव अनंत, शिव कृपा अनंता। और अब अगर पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी तो ये भी महादेव है। Then indestructibility. Then even my child is a form of God. Even my wife is a form of God. And then all the ups and downs are nothing but lessons for me to grow. And I grow, I really do grow in life because I have no resentment. I have no resentment towards the people above me. I have no resentment to my God, because resentment is, I say to God, why did you not protect me? Why did you let me suffer? It is all right. It was your karma. And that thing happened in your life. But now what? Do you want to wallow in your suffering? Pain is temporary. Suffering is self-inflicted. Pain is that thing came in life, it went away, and you have the power to heal. Suffering is refusing to heal and saying that I will relive it every single day. I will think about it every single day. Pain comes. Suffering, you choose. Why are you choosing to suffer? Why are you allowing yourself to remain in that hole? And every time you look up to God and say, तूने क्यों होने दिया मेरे साथ ऐसा? Then you are choosing to suffer. And you are not just suffering, the people who love you are suffering. And even your guru is suffering. Because what is that poor holy man has done wrong that you are making him do overtime? सतयुग से लेकर कलयुग तक बेचारे को खींचते खींचते ले आए। वो भी अपना सर शिवलिंग पे मार रहा होगा कि कहाँ ये साधक के साथ मेरा कनेक्शन हो गया, कि मैं बार बार हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं, किश्ती भेज रहा हूं, यूएफओ भेज रहा हूं, ये पकड़ ही नहीं रहा उसको। और उसका कर्म है तुम्हें हेलीकॉप्टर भेजना, और तुम्हें अपना कर्म अब छोड़ना होगा, उसकी हेल्प को स्वीकार करना होगा। तुम अपने गुरु को कहते हो, हे मुझे मुक्ति दे, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं तुम्हारे गुरु की तरफ से कि हे शिव योगी अब तुम उसे मुक्ति दो। और मुक्ति कब देना शुरू करोगे? जिस दिन तुम ऊपर देख के कहना बंद करो कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या किया, ठीक है जो हुआ हो गया, नाउ व्हाट? डू यू वांट टू रिमेन इन दैट, और डू यू वांट टू कम आउट ऑफ इट? And if you want to come out of it, come back to your faith. Come back to your belief. And then the question will come, what if something like that happens again? Well, we don't know.
Maybe in life joy will come, happiness will come, divinity will come, and maybe, yes, pain will come again. But if you allow yourself, open yourself, then there is a good chance, there is a probability that joy will come. But if you do not allow yourself and you wallow in the self-pity, then definitely no joy will come and only pain will come. So on one path, there is at least scope of growth. On another path, there is nothing but darkness. So why walk the path of darkness? Why not come back to your faith? Come back to your belief. Come back to the Guru. He is waiting for you. Your God is waiting for you. And they love you. And yes, maybe not in the way that you want. और तुम्हें पता भी क्या है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. They love you in the good way. बच्चा तो हमेशा अपने माँ बाप से नफरत करना. क्यों? क्योंकि माँ को अगर देखो ऐसा लगता है कि चुड़ैल है. क्यों? क्योंकि मुंह में खाना ठूसती है, मुंह में दवा ठूसती है, नाक में सलीन वाटर ठूसती है, कुछ ना कुछ करती रहती है. जब तुम सो रहे हो तो तुम्हें जगा देती है स्कूल भेजने के लिए. जब तुम टीवी देख रहे होते हो तो बंद कर देती है ताकि तुम्हारी आंखें खराब ना हो. जब तुम खेल रहे होते हो तो तुमसे तुम्हारा खेल छीन लेती है और कहती है पढ़ाई करो. मां से बुरा तो एक बच्चे के लिए कोई है ही नहीं. तो अगर तुम्हें तुम्हारे भगवान बुरे लगने शुरू हो जाए, शायद समझ लेना तुम्हारे भगवान भी तुम्हारी माँ की तरह तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और शायद ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं ताकि तुम भी उस मुकाम तक पहुंच सको जिस मुकाम पे तुम पशु नहीं, तुम देव हो. और इसलिए हे शिवयोगी, सुपात्र बनना. तुम्हारे गुरु कम से कम शब्दों में तुमसे बात करे, स्वीकार करो. ज्यादा से ज्यादा में करे, स्वीकार करो. Whatever, whichever way he comes to you, take it. Malleability. Stop telling the divinity what to do. Who are you to be the judge? Accept the changes in nature the way they come and evolve and adapt according to them. Trust the divinity. Be malleable. And third, indestructible. Do not rust. Do not drop your faith. इस जीवन में तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें इस माया जाल से बाहर निकालेगा, जो तुम्हें इस थर्ड डायमेंशन से बाहर निकालेगा. Your faith, your belief are the strongest tools that you have. They are the key to your happiness, success, and joy. So come back to your faith. Come back to your belief. Become innocent once again. Be like a child once again, and good things will start to happen. And in the end, सोने का क्या है, सुपात्र का क्या है? जिस तरीके से सोने को भी जलाना पड़ता है ना, to burn all the impurities, we must put the gold in the forge. In the same manner, अगर तुम्हें भी लगता है कि बहुत रुकावटें हैं, कि तुम्हारे भी भीतर बहुत फ्रिक्शन है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी, इट जस्ट मीन्स कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा तपाना होगा, थोड़ी साधना को बढ़ाना होगा. शायद तुम्हें थोड़ा तप करने की ज़रूरत है. और अगर शुरुआत में तुमसे साधना नहीं हो सकती, आंखें बंद नहीं हो सकती, और सही भी है, क्यों होगी? क्योंकि भीतर इतने सारे विचार हैं. मैं तुम्हें बोलूँगा आंखें बंद करो, भीतर देखो क्या दिखता है, तुम्हें तो टपूसी मारते बंदर ही दिखाई देंगे. तो ऐसे में तुम शुरुआत में तप कैसे करो? दुर्गा सप्तशती. दुर्गा सप्तशती तुम्हारी सहायता, क्योंकि मंत्रात्मक साधना है. मंत्रात्मक साधना धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों को काटेगी, फ्रिक्शन को काटेगी. दूसरा, योगा ऑफ इमॉर्टल्स. योगा ऑफ इमॉर्टल्स थोड़ी हठयोग वाली साधना है. तो तुम अपने शरीर का जब इस्तेमाल करोगे, तुम इस साधना को करोगे, तो अपने आप तुम्हारे कर्म कटेंगे, तुम्हारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स कटेंगे, और फिर तुम गहरी साधना के लिए तैयार हो जाओगे. फिर जब तुम आंखें बंद करोगे, भीतर बंदर टपूसी मारता नहीं दिखेगा, भीतर मुस्कुराते भगवान दिखाई पड़ेंगे. तो अगर तुम कहते हो कि मुझसे साधना अभी नहीं हो पा रही, ऐसा नहीं है कि तुम पागल हो या अनोखे हो या अलग हो. तुम हो.
और बस भीतर बहुत चक्काजाम है, एक इमोशनल कॉन्स्टिपेशन है, शायद इसलिए साधना नहीं हो पा रही। तो अगर इमोशनल कॉन्स्टिपेशन है तो ये तुम्हारा कायम चूरन का काम करेगा। तुम सप्शती करो, रोज करो, और तुम योगा ऑफ इमॉर्टल्स की साथ रोज करो। तुम्हारा भला होगा। और धीरे धीरे जब हल्का लगना शुरू हो तब तुम फोरम ज्वाइन करो, तुम शिविर में आओ, और तुम पाओगे तुम्हारा भला हो रहा है। बट देन व्हेन यू विल कम टू द शिविर, यू विल नॉट कम एज अ ब्लॉक ऑफ वुड, देन यू विल कम एज अ सुपात्र, ready to take everything that the divine is ready to give you. So thank you so very much. I bless you, I salute you, and I salute the God within all of you. आप सबको, आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। आपसे अब मिलेंगे अगले संडे को, सेम टाइम। Before you leave, please like the video, subscribe to the channel, and share the video in whichever way that you can. WhatsApp पे शेयर करो, YouTube पे शेयर करो, तुम्हें पता है कैसे, because this is your forte. Now go wild with the interactions. So thank you, bless you, Namaste Shivaya.